Now let's begin with therapeutic of acne. कौन सी मेडिसिन गाइस आप यूज करते हो? Calibrom, Yes, Burberry, berberries, okay. कैलिब्रूम आर्स आयोड एंड बर्बेरिस. कभी कभी हिफोसल्फ भी सर. Okay. सब मैंने जी आगे Ars Broms, आर्स ब्रोम है, जोरदार देखा है. फिर आर्स ब्रोम इज सिंगल रेमेडी फॉर acne with diabetes mellitus, if I am not wrong. It is the single remedy. Or in repertory, one remedy is there, acne with less weight or with emaciation. In those cases, the single remedy is abrodinum. Sorry. Remedy is abrodinum. क्या दिखा रहे हो? हाँ. A general's diabetes accompanied by acne. Ars brom, the single remedy is there. तो डायबिटीज के साथ जितने भी पेशेंट आते हैं एक्ने के लिए, we can think of ars brom. यस, आप काली ब्रोम बोल रहे थे, आप सिलिसिया बोल रहे थे. सॉरी, बिलो लिप के लिए कौन सी बताई थी? हाँ, चीन के लिए, दैट इज ऑन चीन. तो चीन के लिए मेडिसिन इज वायोला टी. ओके सर. आप काली ब्रोम बोल रहे थे, आप सिलिसिया बोल रहे थे, आप आर्स आल्ब बोल रहे थे, आर्स ब्रोम और कई बार हेपारसल, कई बार बेला. फिर जुगलन सार, कौन सी? जुगलन सार, ये कौन सी मेडिसिन? स्पेल आउट करो. JUJ. स्पेल आउट करो ना डॉक्टर गुड्डन. JUGLANS. That is okay, okay. That is jubilance. Okay, okay. और कोई मेडिसिन? एंटीम क्रूड, Yes, antium crude and पल्सेटिक, CS, then sulf, then पल्सेटिक, हाइड्रोकोटाइन, pulsatile. ये हाइड्रोकोटाइल कोई कहीं से आई है. हाइड्रोकोटाइल, मक्सॉल, डलकामारा, then यूजेनियम जैम्बोसा, Natromule, then ओफोरिनम, Forainum, then यूजेनिया जैम्बोसा, yes, Eugenia कौन लेके आया? मुझे आ गया. Eugenia is one of these specific remedy, guys. You can use on 30 or 200 potency for comedons. This is the specific medicine, the for comedons. Eugenia. Is it mentioned in Bori? देखो, open Bori. क्या लिखा है? Acne simple and indurated. The pimples and some area around it is painful. Acne rosacea, nausea, better smoking, comedons. Okay. So this is the specific remedy for comedons. Now let's begin with basic. You can specific remedies you can use, that is calcarea sulf and silicea, that is in 6x potency. These two biochemic remedy that will definitely help you. बहुत सारे पेशेंट के अंदर we are using this remedy along with the constitutional remedy or along with some defecting remedy. Along with this defecting and constitutional, you can think of CS6X and silicea 6X. ये दोनों का रोल क्या है? How it works? Silicea 6X and CS6X में से let's talk about CS6X. तो CS6X जितना भी पस फॉर्मेशन होता है, जितने भी डेब्रीज होती है, उसको रिमूव करता है या बाहर निकालता है. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिशिया? सिलिशिया हेल्प्स इन रिजॉल्विंग, दैट हेल्प्स इन पार्ट ऑफ हीलिंग. तो जो पस फॉर्मेशन बाहर निकला है और उसको रिजॉल्व करने के लिए सिलिशिया वर्क्स. तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा है कि होम्योपैथी से एग्रावेशन होता है. तो दिस इज फॉर दोज पीपल हु बिलीव कि होम्योपैथी से एग्रावेशन होता है. तो व्हेन यू प्रिस्क्राइब CS6X, तो जब भी उसमें पस फॉर्मेशन ऑलरेडी इनसाइड होता है, तो CS6X से थोड़ा बाहर निकलता है.
तो व्हेन यू प्रिस्क्राइब फर्स्टली कैलकेरिया सल्फ, तो इनिशियली 15 डेज और 20 डेज तक वो पस बाहर निकल सकता है। उसको आप एग्रावेशन गिलो, उसको मैकेनिज्म बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन। तो उसकी वजह से पस फॉर्मेशन थोड़ा बाहर आता है। पेशेंट को समझाओ कि जितना भी पस था, ऑयल ग्लैंड के अंदर या सीबेसियस के अंदर जो बाहर निकला है, और उसको रिजोल्व करने के लिए ऑलरेडी सिलिसिया दिया हुआ है, दूसरी मेडिसिन दी हुई है, तो दैट विल हेल्प यू। लेकिन इनिशियली पस बाहर निकलेगा, तो नॉट टू वरी। दिस टू स्पेसिफिक रेमेडी फॉर एक्ने। सर दोनों We are prescribing to both the medicines together. You can think of both the medicine together in biochemic potency, that is in 6x potency. ओके Sir, when there is no pus in the acne, it is a simple papule, even then can we In those prescribe cases, this? yeah, you can think of silicea in that case. Don't think of CS in that case. सिलिशिया उसको Okay. रिजोल्व करने में हेल्प करेगा, उसको जो इंजरी हुई है, जो सेल्स की होती है, उसको हीलिंग में प्रोसेस में वो हेल्प करेगा, दैट इज सिलिशिया। तो सीएस नहीं देना है, सिर्फ सिलिशिया देना, राइट? Now Maxol, when there is excess Yes. pus formation, in those cases you can think of Maxol. Along with that, Maxol की modalities होनी चाहिए, excessive thirst होनी चाहिए, along with that perspiration is offensive. When you get such condition, you can definitely think of Maxol. The cause behind acne is excessive secretion of sebum. तो जितनी भी मेडिसिन है जिसके अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सीबम है और जिसके अंदर ग्रीसी ऑयल फेस है, those all remedy we can think of in such condition. As an intercurrent you can use. You can think of sorinum, you can think of netramure, you can think of plumbum metallicum. These three are the leading remedy for excessive secretion of sebum. तो आपने netramure दिया है, if it is required, think of sorinum as a complementary. आपने sorinum दिया है, now it's time to think of plumbum metallicum as a complementary. So ये three remedy you can repeat each after each another after each other, right? As a excessive secretion, क्योंकि हमें cause भी treat करना है, तो in those cases ये definitely use करो, it works excellently, guys. Now it's all about comedones. तो comedones की जब भी बात आती है, the leading remedy in our practice, that is antium crude, the leading remedy, guys. Believe me, when you get the comedones, always you can think of antium crude. It works like anything. You can think of antium crude 200 TDS, you can think of antium crude 1 MOD. We generally prescribe antium crude 1 MOD along with CS6X and Silicea 6X. This is our first prescription in acne patient, netramure 1 mg single dose, antium crude OD, CS, Silicea 6X TDS. This is the common. If you don't get anything in personality, if you don't get anything in the case, simply prescribe this. If it's a case of comedones, you can think of thuja. Yes, even you can think of thuja in milia. That excellently work in cases of comedones. When there is redness, if it is rosacea, you can think of belladonna. You can think of sandcane. You can think of carbovage. Carbovage having acne specifically on forehead. Is it mentioned in book? Nikalo. Even Ledampal having acne on forehead. लेकिन कैसे पेशेंट के अंदर पता है किसी को? Anyone? Acne on forehead, especially in this kind of people, that is mentioned in Ledampal. Anyone knows? Cold perspiration. No. Nikalo keynote. Is it mentioned? Let's read carbovage first. क्या लिखा है? हेड के अंदर लिखा हुआ है is on any other individual, hair feels sore, fall off easily, scar, pimples on forehead and face. Specifically forehead के ऊपर acne है, तो think of carbovage. And face के ऊपर तो है. और स्किन के अंदर रोजेसिया भी लिखा है, ऐसा
डॉक्टर का कहना है। सर लेडम तो पल्स में आई थिंक विस्की एंड ब्रांडी जो पीते हैं उनके अंदर कुछ है समथिंग। यस राजवीर, बहुत सही है। एक्ने ऑन फोरहेड स्पेशली ऑन ब्रांडी ड्रिंकर्स। तो जितने भी लोग विस्की पीते हैं दैट इज स्पेसिफिक ब्रांडी, तो उसके बाद जब होता है तो यू कैन थिंक ऑफ लेडमपाल। वी यूज लेडमफॉल इन मेनी पेशेंट हु आर नॉट टेकिंग ब्रांडी, तो उसके अंदर यूज नहीं कर, मेडिसिन इज नॉट हेल्पिंग मच। So वैसे patient who are on brandy, who are taking alcohol regularly, in those cases, if they get acne on forehead, you can think of ledampa. लिखा, is it mentioned in book, guys? Yes, sir. हाँ, क्या लिखा है डॉक्टर दिव्या? Red pimples or tubercles on forehead and cheeks, as in brandy drinkers, stinging when touched. Yes. और टच करने से पेन भी होता है। Yes, as we are talking about acne, तो oily face के साथ जब भी patient is hot, in those cases you can think of sulfur. और सल्फर में आई जनरली कंफर्म द सिम्टम कि एक्ने है, पस्चुल है या नहीं है, लेकिन आपको इचिंग आती है। इफ देयर इज इचिंग अलोंग विद एक्ने, यू कैन थिंक ऑफ सल्फर एंड पेशेंट मस्ट बी हॉट। हॉट पेशेंट है, एक्ने है, एंड अलोंग विद दैट पेशेंट को इचिंग हो रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ सल्फर। सल्फर वी आर गिविंग इन मोनो पोटेंसी every week if it is required. Yes, in teenage, acne is very common. If the modality of it, the constitutional matches, we can think of pulsatilla. What is the difference between pulsatilla and cyclamen? Anyone? Pulsatilla में better by open air and cyclamen aggravation by open air. Okay, very good. Any other? Discharges blind होते हैं pulsatilla में Okay, and cyclamen में blind नहीं होते हैं. okay. Cyclamen and pulsatilla, both the remedies are very much similar. लेकिन क्लिनिकली एज यू टोल्ड कि पल्सटीला को एमिल्यूरेशन होता है ओपन विंड में, पल्सटीला को बारी और विंडो ओपन कर दे तो अच्छा लगता है, लेकिन साइक्लामेन को उससे एग्रावेट होता है। दिस इज वन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम द मोडालिटीज। Another differentiating point in menses. If the menses is delayed, think of pulsatilla. If the menses is reoccur, if it is metrorrhagia, if it is menorrhagia, in those cases you can think of cyclamen. This is the differentiating point between these two remedies. Excessive dysmenorrhea, that is also there in pulsatilla, that is also there in cyclamen. But this is the differentiating point between these two remedies. Both are very much similar, both having whipping tendency, both having that timidness, both having that shyness. Again, when you get such differentiating point, you can prescribe the remedy which suits to the person, right? This is a differentiating point. Yes, guys, Calibrom is one of the favorite remedy that works excellently when there is acne on the body along with face. तो body acne के लिए और teenage body acne के लिए this specific remedy is Calibrom. According to me, Calibrom is always suits with the patient of PCOS. बहुत सारे symptoms are similar with the PCOS in Calibrom. तो जब भी PCOS वाले patient होते हैं जिसको acne हो रहे हैं, तो you can think of Calibrom. Acne on arms, acne on shoulder, think of Calibrom. And yes, Calibrom is the specific remedy for scars of acne. जितने भी scars रह जाते हैं acne के, in those cases you can think of remedy. That is Calibrom. Yes, in patient of acne with pus, we are sometimes prescribing streptococci. Streptococci is always about redness, as I already told you. जब भी रेडनेस लगती है, रोजेसिया होता है और रोजेसिया के साथ पस फॉर्मेशन होता है, इन दोस केसेस यू कैन थिंक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई. In the case of cystic acne, in the case of keloidal acne, you can think of thiocyanine, you can think of calcarea floor.
You can think of acid nitricum when there is associated with bleeding from acne. If there is bleeding for acne, think of acid nitricum. If keloidal acne is there, think of thiocyanine. Think of calcarea floor. And think of gunpowder. Gunpowder is not mentioned in boric, that is mentioned in boric in kali nitricum, if I am not wrong. निकालो. Kali nitricum के relationship में it is mentioned. Sir, gunpowder I have used for repeated abscess. It has very good results. Gunpowder in 3x potency. I have used for relapse of abscess, especially in diabetics. Yes. जितने भी recurrent abscess और recurrent boil वाले patient आते हैं, उनके अंदर we can think of this remedy, that is gunpowder. Calcarea sulf CS is the remedy for recurrent abscess or recurrent boil. Along with that, you can think of this remedy, that is gunpowder. Yes, you can use it in lower potency, 2x, 3x, 4x, जो भी आपको available मिले वो. Generally, it is available in 3x and 4x. Yes, kali nitricum में mention किया है. Yes, sir. हाँ. Yes, in 2x tried cherosion, right? Blood poisoning की remedy है, septic suppuration में use कर सकते हैं. So this is the remedy for acne or having pus formation and keloid formation. You can think of this remedy in general for keloid. Guys, kali nitricum is one of the good remedy for respiratory. It is one of the best remedy for bronchitis or asthma or nausea, that breathlessness associated with nausea. लिखा हुआ है ऐसा कुछ? Bronchitis with sharp, short, dry, hacking cough. Asthma with excessive dyspnea, nausea. तो जब भी asthma or breathlessness is associated with nausea, in those cases you can think of kali nitricum. It is one of the good remedy for cardiac asthma. Cardiac asthma क्या होता है guys? Anyone? हमने respiratory asthma पढ़ा है, हमने gastric asthma पढ़ा है. What is cardiac asthma? Yes, that is congestive cardiac failure या left ventricular failure. आप आईसीयू में काम कर रहे हो, आपके वहां पे breathlessness वाला पेशेंट हो आया है, so that is not always respiratory, that can be cardiac. और जब भी ऐसे acute cardiac pain के साथ पेशेंट आता है, in those cases we have three wonderful remedy. One is naja, one is loricirasus, one is spongia, and the fourth one is kali nitricum. These are the wonderful remedy for cardiac asthma or coughing due to cardiac cause. So you can add one remedy, that is kali nitricum, in your list. सर नाजा के बाद कौन सी बताई? Loricirasus. निकालो loricirasus in boric. One is lacnanthus, that is typically for sternum, that is for torticollis. Mustard के लिए, and one is loricirasus. Spongia. चार ही है. कोई मिली loricirasus किसी को? Yes, sir. क्या लिखा है? Spasmodic tickling cough, especially in cardiac patients, is often magically influenced by this drug. Yes. So you can use this remedy in ICU. जब भी आपके पास patient आता है having excessive difficulty in breathing due to cardiac cause. MI वाला भी patient हो जिसको difficulty in breathing हो, think of this remedy along with congestive cardiac failure. Right? And another remedy we have, that is Iberis. Iberis amara, Amari Iberis. And Nicalo Iberis, that is also one of the good remedy for cardiac.
जो हिमांशी ने ढूंढी है हमारे लिए, और वी आर यूजिंग दिस रेमेडी आइबेरिस गाइस। माइट्रल वार प्रोलेप्स वाले जितने भी पेशेंट आते हैं, कार्डियक की बात निकली है तो लेट्स डिस्कस, इसीलिए कर रहे हैं, एक्ने तो ट्रीट करने ही वाले हैं। जितने भी Cardiac diabetes after influenza. यस, अंजाना पैक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस। जब भी आपके पास पेशेंट आता है हैविंग एक्सेसिव पाल्पिटेशन, तो इफ इट इज कार्डियक ओरिजिन यू कैन थिंक ऑफ आइबेरिस। एक्सेसिव पाल्पिटेशन कौन सी कंडीशन में होता है कार्डियक में? ट्रैकीकार्डिया, एक्सेसिव Supraventricular tachycardia. यस, एसवीटी, एंड दूसरा VT, ventricular tachycardia. These are the two conditions: excessive increase in pulse, excessive increase in excessive, that is tachycardia. The pulse is increased. If patient having palpating sensation, in those cases you can think of this remedy, that is Iberis. Is it mentioned tachycardia? Yeah. Wake up, palpitation about 2 AM, रात को ही 2 बजे के आसपास palpitation होता है, think of this remedy. Palpitation heard by another person, कौन सी मेडिसिन है? The remedy is Spigelia, guys. That is mentioned in Nash. Wife भी सुन सकती है husband का palpitation, that is Spigelia. कभी अरेंज करेंगे कार्डियक के ऊपर भी एक सेशन, मजा आएगा।